Okay, so there are 6 modules. The first module is talking about introduction to data warehouse and data mining. So a brief overview of what is data warehouse system, what is dimensional modeling, what are OLAP operations, and then it switches to data mining introduction, like what is data mining, why data mining is required, what is KDD process, what are the steps of KDD process, and so on. And module number 2 onwards, it is mainly on data mining. Okay, so module number 2 onward, that is 2, 3, 4, 5. The remaining 4 modules are completely for data mining. And the 6th module is different business applications where business intelligence can be used. Okay, so module number 2 is about data exploration and data pre-processing. What are the different techniques available for data exploration and data pre-processing? Then module number 3 is about data mining operation called classification and regression. Module number 4 is data mining operation called clustering. And module number 5 is another data mining operation called association rule analysis. Okay, so there are so many algorithms, so many methods, so many techniques, lot of sums to be solved. Okay, so except module number 1 and module number 6, where we don't have any numericals, but module number 2, 3, and 4, we have many numericals also. And these numericals also appear in end semester exam. Okay. I don't know why IT students are not giving importance to this particular subject, because the subject is very, very closely related to machine learning. Okay, and in the revised syllabus of INFT, there is no subject called machine learning. Okay, you have AIDS 1 and AIDS 2. In AIDS 1, which is currently right now in your 6th semester, there is one module where they have just introduced the concept of machine learning. What is supervised learning, what is unsupervised learning, very brief introduction to machine learning. And at present, at least I don't know what is AIDS 2, what will be the content of AIDS 2. Okay, so because machine learning, deep learning are the most happening area domain in industry as well as in research everywhere right now. Okay, so as IT students, you must be well versed with machine learning techniques. Okay, so if you want to make your self comfortable in machine learning, this subject is very, very important. Okay, because those techniques, what we are going to study in data mining, they are very closely related to machine learning. Okay, so I think this is one of the most important domain and one of the most important subject in your curriculum. Okay, fine. Those who have selected ADMT in previous semester, they have some idea about data warehouse, because in ADMT there were 2 modules on data warehouse. Okay, so they have studied data warehouse in full detail, but I don't know how many of you have opted ADMT as department level elective in semester number 5. Okay, so can we start with module number 1? Are you all ready? Yes, sir. Okay, so what is important is, like, during the class, I will ask you to note down some points. Those points are very important, okay, from exam point of view. Okay, and material that I will be sharing, okay, also will be equally important. All right, fine. So let us start with introduction to data warehouse. What is data warehouse and why we require data warehouse? Okay, so you all have studied database system. You all have studied database system. The purpose of database system, can anyone tell me what is purpose of database system? DBMS का purpose क्या है? What is the goal? To store necessary data. Just to store necessary data? Private. Sir, to store the data in a structured format. Okay, and someone said retrieve it. Yes, Okay, and to perform so, operations. Okay, which operations? So the crucial, Like updating, deleting. Okay, that is nothing but data manipulation. DML. DML padha hoga na, data manipulation language. Okay, so the purpose of DBMS is to store data and retrieve data or manipulate data efficiently. Okay, but what if you want to perform analysis of data, complex analysis of data? DBMS cannot do.
So why do we require data warehouse? Okay, so first of all, the need for data warehouse. Okay, the need for data warehouse. So you can just write 1 or 2 points here. Okay, it is used to perform complex analysis of huge amount of data. Sir, if you don't mind, can you repeat the sentence, please? Yeah, okay. It is used to perform complex analysis of huge amount of data. Okay. It is mainly used for analysis of business data. It is mainly used for analysis of business data. Okay, fine. Now, what can be done so that analysis of data becomes efficient? Okay, DBMS में क्या होता है? What can be done in, or what is done in DBMS so that storing and retrieving data becomes efficient? DBMS में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से डेटा स्टोर करना और रिट्रीव करना is efficient? So we use SQL language, that's why. No, language कौन सा यूज करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता. So How you data sequential manner में stored रहता है. How you organize your data is important. How you design your data, like your database application, that is important. Okay, so given a problem statement in DBMS, how you design your data? Tabular. सीधा टेबल बनाओगे. मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है. You will directly draw tables कि मुझे ये टेबल चाहिए, वो टेबल चाहिए. What you do first? Entity define करना रहता है. Okay, we apply ER model. Yes, sir. Right? ER model apply करने से पता चलता है कि ये problem statement में these are the entities, these are the attribute, this will become primary key, then their relationship, then mapping constraint, then participation constraint, and if specialization, generalization, everything we get to know. Okay, once your ER model is ready, you convert it into diagram called ER diagram. बराबर. ER diagram सबने ड्रॉ किया होगा. Rectangle, double outline rectangle, ellipse, diamond shape, right? And then you convert ER diagram into relational schema. तब जाके पता चलता है कि ओके मुझे डेटाबेस में कौन से टेबल चाहिए. Okay, fine. Okay, my original question was DBMS में हम ऐसा क्या करते हैं because of which the data storage and retrieval is efficient? Apart from ER model, any other answer? ER model is, yeah, it is one correct answer. Something is missing, something more is required. Something else also. Everything in tables which are related to each other. Okay, now I let me answer that. What else we do in DBMS so that data storage and data retrieval is efficient? We perform normalization. पढ़ा है normalization? Yes, sir. 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF. Why do we perform normalization? To avoid redundancy. Redundancies. Exactly. The main goal of normalization is to avoid redundancy. Redundancy से क्या problem है? What is the problem with the redundancy? Amount of space बहुत बढ़ जाता है to store that data. No, that is not it. Let's say I have huge amount of space. I am not worried about space. The same information is repeated twice. Like if there's some derived That is attribute, then redundancy.
That is redundancy. What is the problem Sir, because if of we redundancy? add, update or delete data, then we may also lose the necessary data. Okay, right. So there are various anomalies associated with redundancy. Okay, update anomaly, delete anomaly, insert anomaly. Okay, so there are different anomalies, and that is mainly because of redundancy of data, repetition of data. Okay, so if your data is not properly normalized, we face all these problems. Okay, so in DBMS, we have two things. In DBMS, we have two things. First of all, we have ER modeling. And second thing, we have normalization. Okay, the purpose of these two things, ER modeling and normalization, is to make your database easy to access and easy to store. Okay, efficiently. Easy in a sense, efficiently. Okay, so that is the reason why data is efficiently stored and retrieved in DBMS, mainly because of these two reasons. ER modeling से हमने उसको डिजाइन किया है, and then normalization भी अप्लाई किया है ताकि कोई redundancy वगैरह ना रहे, कोई anomalies ना रहे. Okay, that is about DBMS. That is in DBMS. अपना पर्पस यहाँ पे क्या है डेटा वेयरहाउस में? What is the goal of data warehouse? जैसे अभी लिखा आपने, to perform analysis. Analysis मतलब what? You read out lot of data. Okay, पिछले 6 महीने का डेटा रीड करो और फिर उसको एनालाइज करो. Okay, it is that most of the time data warehouse we want to read the data. हमें वहाँ पे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं करना है. We don't want to update anything. We don't want to delete anything. We don't want to insert anything. Okay, in short, we are not going to use DML. मैनिपुलेशन करना ही नहीं है हमें. हमें क्या करना है? डेटा रीड करो, एनालाइज करो, रीड करो, एनालाइज करो. Okay, there are different aspects how to do that, but right now what we are focusing on, we don't want to perform data manipulation. We want to perform retrieval and analysis. Now tell me, if your purpose is retrieval and analysis only, do you mind redundancy now? Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, so my question you have heard. Sir, actually your voice is cracking a bit. The voice is breaking and your video is gone. Yeah. Sorry, I'm not able to hear you. My voice is cracking. And your video was gone, sir. Should I stop my video? I will just be speaking. You need not see my video. I will stop the video. Sir, your video is stable. So you are not able to see my screen? We can hear you, but your video is stable. So should I stop video? It's okay? Yes, sir. Yeah, it's fine. Maybe network issue रहेगा. Like I will stop the video. Hello. Okay, now audible? Yes, sir. If your purpose in data warehouse is to read data and perform analysis, you don't want to perform any manipulation, update, delete, insert वगैरह नहीं करना है. So do you mind redundancy now? No, sir. It doesn't matter. It doesn't matter much now. Okay, so because of this reason, in data warehouse, we'll not be using ER modeling. We'll be using something called dimensional modeling. Okay, हम क्या यूज करेंगे? डायमेंशनल मॉडलिंग यूज करेंगे. और उसके साथ हम यूज करेंगे denormalization, just opposite to normalization. Okay, normalization में क्या होता है? Whenever you try to convert your relational schema into the third normal form or ECNF, usually एक टेबल मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होता है, right? It will go on breaking down the relation into sub relations, right? याद आ रहा है ना थोड़ा बहुत? Is my screen visible to you? Not yet, sir. It's still loading. Okay, so by meanwhile you can write that particular statement. Okay,
the data in data warehouse, the data in data warehouse is organized using the data in data warehouse is organized using dimensional modeling. Sir, can you please repeat? The data in data warehouse is organized using dimensional modeling. Written? Yeah, done, sir. Sorry? Done, sir. Yeah, it has three main components. It has three main components. First, data to be analyzed called facts. Data to be analyzed called facts, F-A-C-T-S, facts. Second, business dimensions. Business dimensions with respect to which data is to be analyzed, Okay, कहाँ तक लिखा आपने? मैंने जो बोला उसमें से Till analyzed. So business dimensions with respect to which data is to be analyzed. Okay, business dimensions लिखा बराबर. And third, dimension hierarchy. Dimension hierarchy. So you have written all the three main components of the dimensional modeling. ठीक है? लिखा आपने सबने? हाँ, sir. Sir, could you Okay, please so repeat the now first one? the first one is the data to be analyzed. Okay, I'll write here. The three components I'm writing here. First, data to be analyzed called facts. Second, business dimensions with respect to which you have to analyze data. And third, dimension hierarchy. Yes, sir. Okay, so these are Yes, the sir. three main important component of dimensional modeling. What are they? The first thing, what you want to analyze, that is called fact. ये जो analyze करना है उसको किस एंगल से एनालाइज करना है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट यू वांट टू एनालाइज, उसको बोलते हैं बिजनेस डायमेंशन. और पर्टिकुलर बिजनेस डायमेंशन पे कौन से लेवल पे करना है उसको बोलते हैं डायमेंशन हियरार्की. ओके, ये थोड़ा समझा? बिकॉज अवर पर्पस इज टू परफॉर्म एनालिसिस ऑफ डेटा. सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्या एनालाइज करना है, व्हाट यू वांट टू एनालाइज, फैक्ट. Facts are to be analyzed with respect to what? Dimension. In a particular dimension, at which level? Hierarchy. आ गया समझ में? Yes, sir. Okay, now we have to put it formally, like formal in a sense, in a like जैसे हम ER मॉडल में क्या करते हैं, we will draw ER diagram ताकि पता चले कौन सा एंटिटी है क्या है वगैरह पता चलेगा. इधर भी हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे. Okay, so now let us consider one simple case, very simple case. Let's say a sales manager is the user. Okay, उसको हम पूछेंगे कि as a sales manager, what do you want to analyze? You want to analyze this data with respect to what and at which particular level. Okay, और हम उसको एक डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे. तो डायग्राम एक टेबल बनेगा, बेसिकली टेबल इन अ सेंस अ डॉक्यूमेंट. ओके,
मैं बताता हूँ इसका ये डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ओके, एट द बॉटम यहाँ पे, एट द बॉटम यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्ट। ओके, तो यूजर बोलेगा व्हाट यू वांट, वी विल आस्क यूजर दैट व्हाट यू वांट टू एनालाइज। यूजर विल से आई वांट टू एनालाइज प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो रहा है, एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, number of units sold. These are the two things user want to analyze. Okay, we are taking very simple scenario. Okay, it is analysis of sales data. तो यूजर को क्या एनालाइज करना है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सेल हो रहे हैं. Okay, now we'll ask these two data, profit and number of units sold, you want to analyze with respect to what? तो यूजर बोलेगा, the sales manager will tell us, I want to analyze this data with respect to product, with respect to region, and with respect to time. Okay, तो ये हो जाता है अपना डायमेंशंस. तो ये जो कॉलम के हेडर दिख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज बेसिकली बिजनेस डायमेंशन. कौन से प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट हुआ, कौन से प्रोडक्ट का कितना यूनिट गया, कौन से रीजन में कितना प्रॉफिट हुआ, ओके, और कौन से दिन या कौन से मंथ या कौन से साल में कितना प्रॉफिट हुआ, ओके, कौन से दिन में कितने यूनिट सेल हुए. Okay, so nothing but he wants to analyze this data with respect to these dimensions, product, region and time. So these are the three dimensions. अभी जैसे मैं बोला कि कौन से दिन पे कितना प्रॉफिट हुआ, कौन से वीक में कितना प्रॉफिट हुआ, कौन से मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ. आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट लेवल्स अलोंग टाइम. ओके, सिमिलरली रीजन, मतलब रीजन क्या हो सकता है, रीजन एक छोटा सा एरिया भी हो सकता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल दादर रीजन. दादर रीजन में कितना प्रॉफिट हो रहा है हमको, दादर रीजन में कितने यूनिट सेल हो रहे हैं. देन हो सकता है कि मुंबई सिटी की बात कर रहे हो सकता है कि पूरे महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहे हो सकता है कि वेस्ट जोन की बात कर रहे हो ऑफ इंडिया, वेस्ट जोन ऑफ इंडिया, या हो सकता है पूरे कंट्री की बात कर रहे हो. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट लेवल्स अलोंग रीजन डायमेंशन. आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? आई एम टॉकिंग अबाउट लेवल्स. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अभी हम जो वर्टिकली लिस्ट आउट करेंगे आर द लेवल्स. ओके, तो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा टाइम लेवल पे कौन से लेवल पे जा सकता है, तो पर डे प्रॉफिट, लेट्स से डेट, देन वीक, देन पर्टिकुलर डे ऑफ वीक, देन मंथ, उसके ऊपर जाएगा क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, हो सकता है हाफ, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, जा सकता है ईयर लेवल पे. ओके, सो व्हाट आर दिस डिफरेंट थिंग्स आई हैव लिस्टेड? दिस डिफरेंट थिंग्स व्हिच आई हैव लिस्टेड इन दिस टाइम का जो कॉलम दिख रहा है उसको बोलते हैं डायमेंशन हायरार्की. डायमेंशन हायरार्की. ओके, these are dimension hierarchy levels. Similarly region, एक छोटा सा region ले लो, उसको एक ID दे दो. Okay, तो individual region will have ID identified by primary kind of. Then region का नाम होगा. Okay, वो region कौन से city में है वो होगा. Okay, वो city कौन से state में है वो होगा. वो state कौन से zone में है वो होगा, या तो पूरा country होगा. Okay, consider company like McD. तो they may want to find out कि इंडिया में से हमको कितना प्रॉफिट मिल रहा है. ओके, बिकॉज इट इज मल्टीनेशनल कंपनी, तो दे डायरेक्टली टॉक अबाउट कंट्री लेवल. ओके, बट अगर कोई नेशनल कंपनी है, यहाँ का लोकल कंपनी है, दे मे गो टू दादर रीजन और सिटी लाइक मुंबई, और दे मे गो टू मैक्सिमम स्टेट लेवल. आर यू गेटिंग? सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट देयर आर डिफरेंट लेवल्स. एंड सिमिलरली अलोंग प्रोडक्ट we'll have individual products. So product ID होता है, product का name होता है. Then higher level पे जाएंगे तो product का category होता है, product का type होता है, product का description होता है. Okay, product का cost होता है. फिर किसने supply किया वो होता है supplier ID, supplier का नाम, supplier का address, etc. Okay, so these are different levels at which this data is to be like probably analyzed along each dimension.
और ये पूरा टेबल किस लिए बना रहे हैं हम? टू परफॉर्म एनालिसिस ऑफ सेल्स डेटा। तो उसको हम यहाँ पे टाइटल देंगे, टाइटल। Hello, sir. या हाँ sir, the downward arrow symbolizes what exactly? डाउनवर्ड एरो मतलब ये जो मैंने लिखा है, टाइम जो लिखा है उसके अंदर जो मैंने लिखा है, डेट, वीक, मंथ, दे आर कॉल्ड डायमेंशन हायरार्की लेवल्स। तो ये जो पूरा जो है, पूरा कॉलम Sir, तो हाँ बोलो सर बोलो, तो बोलो। इज इट प्रायोरिटी वाइज की डेट को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा वीक के हिसाब से, या मतलब? नहीं 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 नहीं, देखो मैंने एग्जांपल दिया कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जब सेलिंग होता है तो प्रॉफिट होता है कंपनी को। ओके, सेल्स मैनेजर का काम क्या है? कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, वो एनालाइज करना है, राइट? सो ही मे वांट टू फाइंड आउट इन अ डे, ऑन अ पर्टिकुलर डे कितना प्रॉफिट हुआ। सपोज आज का तारीख लो, ऑन 10th of February कितना प्रॉफिट हुआ। दैट इज वन लेवल, ही इज टॉकिंग एट डेट लेवल। हो सकता है कि वो पूछेगा कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी में कितना प्रॉफिट हुआ सब मिला के, तो ही इज टॉकिंग एट वीक लेवल। ओके, जनवरी, सर हाँ एक मिनट, जनवरी के सारे वेडनेसडे को कितना प्रॉफिट हुआ, तो ही इज टॉकिंग अबाउट डे ऑफ अ वीक। पूरे जनवरी मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ, दैट ही इज टॉकिंग अबाउट मंथ। ओके, हो सकता है कि द सेल्स मैनेजर वांट्स टू एनालाइज लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021 कितना प्रॉफिट हुआ था, सो ही इज टॉकिंग अबाउट क्वार्टर लेवल। ओके, व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न्ड इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2021, जनवरी से लेके जून तक, so he's talking about half year level. Okay, so these are different levels along time dimension at which this data or this data can be analyzed. Okay, आया समझ में? हाँ सर। और कोई डाउट है? किसी को भी डाउट है मुझे इंटरप्ट करके पूछो, क्योंकि डाउट दिमाग में रह जाएगा तो आगे और ज्यादा डाउट्स आएंगे और समझ में नहीं आएगा। Sir, in case of किसी को कुछ डाउट है? हाँ पूछो। So in case of facts, जब भी आपने profit दिया हुआ है, so हाँ। we are classifying and defining a profit irrespective to the all the dimensions that are present, right? कि Yes, correct, correct. data decimate कर सकते हैं, correct? Correct. Okay, I'll come to that point. I'll come to that point. Sir, Yes. sir, can you please explain this table again? I was disconnected for 2 minutes. This table is created by asking the user कि तुमको क्या एनालाइज करना है, तो यूजर बोलेगा मुझे एनालाइज करना है प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, उसको बोलते हैं फैक्ट। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि नीचे बॉटम में हम यहाँ पे फैक्ट्स लिखते हैं कि यूजर को क्या क्या एनालाइज करना है, वो यहाँ पे लिस्ट आउट करते हैं। ओके, प्रॉफिट, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एटसेट्रा। ओके, देन वी विल आस्क यूजर कि ये जो एनालाइज करना है आपको, प्रॉफिट, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, यू वांट टू एनालाइज दिस डेटा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? Okay, so user may say that I want to analyze profit with respect to product. कौन से product में कितना profit हुआ? I may want to analyze profit with respect to region. कौन से region में कितना profit हुआ? I may want to analyze profit with respect to time. कौन से दिन पे कितना profit हुआ? So these are called business dimensions. Okay, along each business dimension there are different levels at which this data can be analyzed. So sometimes sales manager analyze करेगा profit for individual region. समटाइम्स पूरे सिटी के लिए एनालाइज करेगा, समटाइम्स स्टेट वाइज एनालाइज करेगा, समटाइम्स वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन के लेके एनालाइज करेगा। अगर मल्टीनेशनल कंपनी है तो कंट्री वाइज एनालाइज कर सकता है। ओके, सो दीज आर नथिंग बट हायरार्की लेवल्स। तो पूरे कॉलम को हम बोलते हैं डायमेंशन हायरार्की, एंड ईच इंडिविजुअल थिंग रिटन हियर इज नथिंग बट हायरार्की लेवल। ओके, ये जो डायग्राम बना है उसको हम एक हेडर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हेडिंग क्या आएगा? सेल्स एनालिसिस। ओके, और ये जो डायग्राम है, ये जो टेबल है, ये जो डॉक्यूमेंट है, उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन पैकेज। ओके, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन पैकेज। ओके, तो जैसे डेटाबेस सिस्टम में गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, योर फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ ईआर डायग्राम। ओके, फिर आगे जाके आप ईआर डायग्राम को रिलेशन में कन्वर्ट करो, एंड देन यू मे परफॉर्म नॉर्मलाइजेशन एंड देन यू इंसर्ट डेटा। वेरी सिमिलर टू दैट, गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टेप इन डायमेंशनल मॉडलिंग इज टू ड्रॉ इंफॉर्मेशन पैकेज। ये समझा सबको? Yes, sir. Thank you so much. एवरीवन, किसी और को डाउट है? मैंने जो अभी लास्ट में बोला, गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टेप
in dimensional modeling is to draw information package. Okay, how will you draw information package? So we'll ask user, what do you want to analyze? उसके reply से हम क्या design करेंगे? Fact. Then we'll ask, you want to analyze this fact with respect to what? So user will specify various dimensions like product, region, time, customer, salesperson. हो सकता है. There could be many other dimensions. हम यहाँ पे simplest case consider कर रहे हैं right now. So those are the dimensions. And then we will ask user, at each dimension, tell me you want to analyze this data at what all different levels. आपको profit खाली day wise चाहिए कि month wise भी लगेगा, quarter wise भी लगेगा, year wise भी लगेगा. Okay, तो user ने जो हमको बोला कि I want to perform analysis of this data along time dimension at this levels. All those levels are listed vertically and called dimension hierarchy. यहाँ तक सबको समझा? Yes, sir. Okay. और टेबल का नाम, that is information package का जो नाम है, नाम in a sense the heading, उसको हम देंगे यहाँ पे sales analysis, depending upon what you are analyzing. So because this is for sales data analysis, I am calling this entire information package as sales analysis. Okay. Now, जैसे database में, what you do after drawing ER diagram? क्या करते हैं ER diagram को देख के? Hello. Get tables. Tables बनाते sir. Okay, my question is, can you store data in ER model? No, sir. No. Why no? Because it is just design of the data. क्या store करना है, उसका relationship क्या होगा, that you are explaining with the help of diagram. Exactly in the same way, this is information package. It doesn't store anything. It is just the way you are specifying that these are the facts to be analyzed, these are the dimensions at which along which you want to perform analysis, and these are the levels along which the user may perform analysis of data. और ये सब user से ही मिलता है. Okay, requirement gathering में user से ही ये सब मिलता है. Okay, एक बार information package ready हो गया, okay, then it is converted into set of tables. Just like ER diagram is converted to relational schema. Okay, now just before that, I would like to cover one more point. Now ये जो requirement है user ने जो बताई है, उसको हम visualize कैसे कर सकते हैं? उसको हम, हाँ, हेलो सर वो टेबल ड्रॉ करना था क्या? एक्चुअली कर लेते तो अच्छा है. आपको इंफॉर्मेशन पैकेज क्या है? I have seen that many students जिन्होंने डेटा वेयरहाउस भी पढ़ा है, उनको इंफॉर्मेशन पैकेज क्या है वही नहीं पता होता है. ओके, तो इट इज एज गुड एज डेटाबेस पढ़ा है मगर ER मॉडल क्या है वही पता नहीं है, ऐसा हो गया. ओके, सो यू ड्रॉ दिस वेरी क्विकली. So until these three parameters are not defined, it will not be called as information package, no? These are the three main components. इसके बिना बना ही कैसे सकते हो? Correct. Yeah, so कोई भी आप एप्लीकेशन डिजाइन करना चालू करोगे, the very first step is requirement collection, requirement gathering from the user. पहले हम यूजर से मीटिंग करते हैं, कस्टमर से मीटिंग करते हैं, the one who are going to use your application. आपको सिस्टम से क्या चाहिए? What do you want? Okay, तो अगर DBMS है तो उसका अलग रहता है, अगर यहाँ पे डेटा वेयरहाउस है तो ये रहता है कि what you want to analyze, because डेटा वेयरहाउस का मेन पर्पस डेटा का एनालिसिस करना है. So the very first question is what you want to analyze. The next question is you want to analyze this with respect to what? Okay, and the third question is with respect to particular business dimension, what are the possible levels at which you would like to perform analysis? ये तीन क्वेश्चन के जब आंसर मिल जाते हैं तो उसके ऊपर से ये डायग्राम ड्रॉ हो सकता है. Okay,
Done? Yes, sir. ऐसा थोड़ा रफली बनाया तो भी चलेगा बिकॉज यू नीड नॉट ड्रॉ एग्जैक्टली. मैंने भी ऐसा रफली बनाया है, बट यू शुड हैव आइडिया कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन पैकेज. जैसे डेटाबेस सिस्टम में टेबल अपने आप, मतलब यू विल नॉट डायरेक्टली कम टू नो कि मुझे ये टेबल चाहिए, वो टेबल चाहिए, वो टेबल चाहिए. यू हैव टू फर्स्ट डिजाइन, you have to first model it with the help of ER model, and then properly you convert it into set of table. तब जाके समझता है कि कौन सा टेबल चाहिए. Very similar to that in data warehouse design, you have to first find out कि मुझे क्या चाहिए data warehouse में. So that is information package. Okay, now the requirement specified by the user. How can we visualize this? Okay, so graphically I can show it like this. Okay, we will say there are 3 dimensions, so I can draw a cube. I can draw a cube. Okay, ये क्यूब भी आपको ड्रॉ करना है बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आता है फाइनल एग्जाम में. Okay, especially what I observed is like girls are very poor in 3D drawing, boys are not. So girls properly draw करना. This is cube. मैंने क्यूब क्यों लिया? बिकॉज मेरे पास 3 डायमेंशन है. Okay, let's say along one dimension we have product. Second dimension, let's say we have region. And third dimension, I will represent time. अपने पास 3 डायमेंशन है, बराबर? Okay, now consider that सेल्स मैनेजर जो एनालाइज कर रहा है उसको 100 प्रोडक्ट्स के बारे में एनालिसिस करना है. देयर आर टोटल 100 प्रोडक्ट्स. तो ये जो प्रोडक्ट का डायमेंशन है, प्रोडक्ट वाला जो फेस दिख रहा है, दैट आई विल डिवाइड इट इनटू 100 डिफरेंट सेल्स, ऐसे कॉलम वाइज. प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, ऐसे करते 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 आई विल डिवाइड इट इनटू प्रोडक्ट नंबर 100. So this is product number 1, P1, this is product number 2, P2, and goes up to product number 100. Okay, now let's say he is looking after different 50 regions. So I will divide the region axis into 50 cells. Okay, this is region number 1, this is region number 2, or I can call region ID 2. ऐसा करते करते कितने हैं total? There are 50 region IDs. So the last one is region ID 50. And he is analyzing this data right now month wise. So the time axis here, consider year 2021 January month to December. So I will divide this time axis into 12 different cells. सबसे पहले वाला जो सेल रहेगा that is January, उसके पीछे रहेगा February, Feb, okay 2021, और ऐसे करते करते लास्ट वाला सेल रहेगा December. This is December. Okay, now if I completely decompose according to this, then पूरा cube ऐसे दिखेगा. Now this is complete region wise dimension decompose हो रहा है. This is time wise decompose हो रहा है पूरा cube. January, उसके पीछे February करते करते लास्ट वाला है December, और ये product wise decompose हो रहा है. This is for product P1 पूरा slice, then this is for product P2 पूरा slice. ऐसे करते 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 last slice is product number 100. ओके फाइन. तो ये पूरा सेल अपना पूरा क्यूब अपना सेल्स में डिवाइड हो गया. ओके, नाउ इफ आई फोकस ऑन वन पर्टिकुलर क्यूब, वन पर्टिकुलर सेल. ओके, इफ आई फोकस ऑन दिस सेल, ये सेल के अंदर विजुअली मैं बोल रहा हूं, विजुअली ये सेल के अंदर क्या मिलेगा मुझे? ये सेल के अंदर सपोज आई एम फाइंडिंग 15,7,000. ओके, तो कोई मुझे बताए ये 15 and 7,000 क्या है? सर R1 के प्रोडक्ट 1 का जनवरी का. ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू क्या है? व्हाट आर दिस टू वैल्यूज? फैक्ट्स. These are the facts. 15 यूनिट सेल हुए, ओके, एंड 7,000 प्रॉफिट मिला. ये फिगर खाली यहाँ पे इतना ही बोलता है, 15 यूनिट सेल हुए, 7,000 प्रॉफिट हुआ. ओके, बट फॉर व्हाट? 15 यूनिट सेल हुए, 7,000 प्रॉफिट हुआ फॉर प्रोडक्ट नंबर 1 इन रीजन नंबर 1 इन द मंथ ऑफ जनवरी. ऐसा पूरा हमको एनालिसिस मिलेगा. In the month of January 2021, in region R1 for product P1, total 15 यूनिट सेल हुए थे, और because of that selling 7,000 प्रॉफिट मिला था.
अगर मैं नेक्स्ट सेल में जाता हूं, उसके बाजू वाले सेल में, ओके बाजू वाले मतलब सपोज इफ आई गो फॉर दिस पर्टिकुलर सेल, आई विल अगेन गेट 2 फिगर्स, मगर वो 2 फिगर किसके लिए रहेंगे? हेलो, उसके पीछे वाले प्रोडक्ट P2 के लिए। हाँ, again I'll get 2 figures. Those 2 figures are again units sold and profit earned, but product P2 के लिए in the same region in the same month. अगर उसके नीचे वाला मैं सेल लेता हूं, वहां पे भी मुझे 2 फिगर मिलेंगे। वो फिगर किसके लिए है? प्रोडक्ट 1 रीजन 2 मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी। आ रहा है थोड़ा समझ में? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? Yes, sir. राइट? अगर इसके पीछे वाला ये वाला सेल में लेता हूं, ओके, तो इन दैट केस प्रोडक्ट P1 ही रहेगा, रीजन R1 ही रहेगा, मगर फरवरी मंथ का डेटा है। ओके, ऐसे हर एक सेल के अंदर मुझे 2 फिगर मिलेंगे। ये 2 फिगर कहां से आए? ये 2 फिगर ऊपर यहां से आए, प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, और ये 3 डायमेंशन कहां से आए? प्रोडक्ट, रीजन एंड टाइम, वो यहां से आए ऊपर, यहां से प्रोडक्ट, रीजन एंड टाइम। ओके, नाउ द थर्ड ओनली थिंग लेफ्ट आउट इज, अभी जो मुझे डेटा मिल रहा है दैट इज फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी P1, इंडिविजुअल रीजन, रीजन आईडी R1, ओके, एंड नॉट इंडिविजुअल डे। मुझे ये लेवल का डेटा मिल रहा है, इट इज राइट नाउ एट मंथ लेवल। आ रहा है समझ में? इट इज एट मंथ लेवल, सो आई एम गेटिंग मंथ January, February, March, April, etc. Okay, fine. Okay, so right now it is at one particular aggregated level. कौन से aggregated level पे है right now your data in this cube? It is at for individual product, for individual region, but not individual date wise. It is month wise. आया समझ में? It is at one particular aggregated level. Okay, अभी इसका advantage क्या है? इसका एडवांटेज ये है, we can perform various OLAP operations. OLAP stands for online analytical processing. Online analytical processing, there are 4 basic operations. The very first operation is, ये डेटा मंथ लेवल पे है। ओके, मंथ लेवल पे डेटा एनालाइज करने के बाद सेल्स मैनेजर को लगा कि ओके, व्हाट इफ आई गेट दिस प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड क्वार्टरली बेसिस, आई वांट दिस डेटा क्वार्टरली बेसिस। ओके, तो क्या करना पड़ेगा? अगर ये डेटा मुझे क्वार्टरली लेवल पे चाहिए, तो ये जो जनवरी, फरवरी और मार्च का 3 सेल है, उसको मर्ज कर देना पड़ेगा, उसको कंबाइन करना पड़ेगा। उसको कंबाइन करके एक सेल बनेगा। एंड दिस ऑपरेशन, आफ्टर दिस ऑपरेशन, आई विल गेट अगेन 2 फिगर्स, I will get again 2 figures in every cell, but now data will be at quarterly basis data and not monthly basis data. तो यहाँ पे खाली 3 रहेगा, मतलब 4 क्वार्टर रहेंगे, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। क्वार्टर 1 के अंदर क्या डेटा आ गया? जन, फेब और मार्च का डेटा आ गया। ओके, तो मुझे ये जो 3 सेल है यहाँ पे, पहले 3 सेल, उसको मर्ज करके एक सेल बनाना पड़ेगा। आ रही है समझ में बात? सर, इसको बोलते हैं रोल अप ऑपरेशन। इसको बोलते हैं रोल अप ऑपरेशन। सो रोल अप ऑपरेशन में क्या होगा? यू कंबाइन सेल्स अलोंग पर्टिकुलर डायमेंशन सो एज टू ऑब्टेन मोर एब्स्ट्रैक्ट लेवल डेटा। मैंने बोला कि ये ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे है, इट इज एट मंथ लेवल। उससे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा? क्वार्टरली बेसिस पे जाओ। उससे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? हाफ ईयर बेसिस पे जाओ। ओके, उससे ज्यादा क्या हो सकता है? ईयर लेवल पे जाओ। तो ईयर लेवल पे जाओगे तो जान, फेब वगैरह नहीं दिखेगा। 2005, 2006, 2007, 2008 करते करते 2021 तक का डेटा मिलेगा। आ रहा है समझ में? इन दैट केस एवरी सेल टेल्स यू प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर रीजन इन पर्टिकुलर ईयर। डेटा वही का वही है, उसको और एग्रीगेटेड लेवल पे लेके गए हम। आ रहा है समझ में? ये ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? रोल अप। रोल अप। किसी को डाउट है रोल अप ऑपरेशन में? ओके, फाइन। सेकंड, ओके, नाउ वी कम बैक टू दिस लेवल। ये लेवल मतलब मंथ लेवल पे।
ये लेवल मतलब मंथ लेवल पे, इन अ पर्टिकुलर सेल आई हैव यूनिट्स एंड प्रॉफिट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर रीजन फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। अभी जनवरी मंथ में 7,000 प्रॉफिट है, राइट, यू कैन सी दैट 7,000 का प्रॉफिट है जनवरी मंथ में। सेल्स मैनेजर को एनालाइज करना है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में कितना प्रॉफिट था, सेकंड वीक में कितना था, थर्ड वीक में कितना था, तब जाके पूरे मंथ का प्रॉफिट 7,000 हुआ। आई वांट टू फाइंड आउट प्रॉफिट अर्न इन एवरी वीक ऑफ जनवरी। ओके, मतलब अभी जो मंथ लेवल पे डेटा है हमें उसको लेके जाना है वीक लेवल पे। तो कोई मुझे बताएगा क्या करना पड़ेगा? रोलअप के लिए क्या किया था हमने? ये रोलअप के लिए हमने मर्ज किया था। रोलअप के लिए हमने सेल्स को मर्ज किया था। ओके, जनवरी फरवरी मार्च का मर्ज किया था। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? इफ आई वांट वीक बेस, ओके, वी हैव टू परफॉर्म स्प्लिट। एक एक सेल को लेके 4-4 पार्ट में डिवाइड करो। जनवरी में 4 पार्ट बन जाएंगे, फरवरी में 4 पार्ट बन जाएंगे, ओके, डिपेंडिंग अपॉन, यूजुअली 4 वीक होते हैं। ओके, तो देन week 1 2 3 4 of Jan, week 1 2 3 4 of Feb, week 1 2 3 4 of March, up to week 1 2 3 4 of December. Okay, we require to perform split of every cell along time dimension. Okay, उसके बाद जो डेटा मिलेगा, उसके बाद मुझे सपोज डेटा मिल रहा है यहाँ पे पहले सेल में, say for example 2 and 1000 फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो ये डेटा क्या है अभी? What is this data? Yes. Facts. अरे वो तो मुझे पता है। What is this data now? ये मुझे पहले सेल में अभी ये मिल रहा है। तो what is it? What is it? What is it signifies? Profit in the first week for product 1 in region 1. Profit in First week of January. Okay. तो अभी ये डिटेल्ड लेवल इंफॉर्मेशन है, डिटेल्ड विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस। जो हमको डेटा मंथ वाइज दिख रहा था वही डेटा अभी हमको वीक वाइज दिख रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं ड्रिल डाउन ऑपरेशन। इट इज कॉल्ड ड्रिल डाउन। सो विद द हेल्प ऑफ ड्रिल डाउन क्या होगा? जितना ड्रिल डाउन करोगे उतना डिटेल डेटा मिलता जाएगा। Okay, now it is not necessary that you can perform roll up and drill down only across time. Okay, can you give me any example of roll up operation along region dimension? अगर मुझे region dimension में roll up करना है तो क्या example हो सकता है? So states को merge कर देंगे अगर country level पे। अभी right now this profit and unit is for individual region R1, R2, R3. Suppose I want what is the profit in Mumbai city, in Delhi, in Kolkata, in Chennai, in Bengaluru? Okay, so in that case, let's say region R1 and R2 both belong to Mumbai region, Mumbai city. Then these two regions, these two cells will be merged together along region axis. बराबर? तो वो हो जाएगा roll up operation along region dimension. Okay, तो उसमें फिर डेटा अगर मैं ऊपर ड्रॉ करूं तो ऐसे रहेगा। हर एक प्रोडक्ट का सिटी वाइज मंथ वाइज डेटा है अभी ये, बराबर? आ रही है बात समझ में? Yes sir. अगर मैंने ड्रिल डाउन किया टाइम एक्सिस पे तो हो सकता है हर एक प्रोडक्ट का सिटी वाइज वीकली बेसिस डेटा है। मतलब कोई भी डायमेंशन में आप कोई भी लेवल पे जा सकते हो साइमल्टेनियसली ऑल्सो। ओके, क्लियर? So one doubt. Yes. So when the person gets the data for analysis, वो तभी पूरा एनालिसिस करेगा क्या कि डेट से लेके हर एक मिनट तक का जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो सब डेटा मिलेगा क्या? बिकॉज अदरवाइज one second, that was my next question. Can anyone tell me I can go drill down कहां तक जा सकता हूं? Tell me. जहां तक उन्होंने प्रोवाइड किया इंफॉर्मेशन। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू दिस एग्जांपल मुझे बताओ, अपने पास इंफॉर्मेशन पैकेज भी है, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस इंफॉर्मेशन पैकेज जब मेरा पूरा डेटा वेयरहाउस डिजाइन हो जाएगा, प्रॉफिट एंड यूनिट सोल्ड यूजर कौन से लेवल तक ड्रिल कर सकता है?
पर डे डेट रीजन हाँ, आईडी और date। ओके, जो सबसे पहले ऊपर लिखा हर एक प्रोडक्ट का हर एक रीजन में डे वाइज प्रॉफिट एंड यूनिट्स, उससे नीचे नहीं जा सकता। अगर वो मुझे बताए, अगर वो मुझे बाद में पूछेगा कि 10th of February फर्स्ट हाफ ऑफ डे मतलब मॉर्निंग 7 बजे से लेके 12 बजे तक कितना प्रॉफिट हुआ, वो डेटा अपने पास नहीं है, क्योंकि वो लेवल पे डेटा हमने डाला ही नहीं है डेटा वेयरहाउस में। डेटा वेयरहाउस में जा रहा है प्रोडक्ट वाइज, रीजन वाइज, हर एक दिन का डेटा, उसके नीचे आप ड्रिल डाउन नहीं कर सकते, समझा? उसके ऊपर रोलअप कितना भी कर सकते हो, रोलअप करते करते कहां तक जा सकते हो टाइम एक्सिस पे? ईयर तक जा सकते हो। फिर पूरे डिकेड का पूछोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर नहीं कर सकते हम, प्रोविजन ही नहीं है यहाँ पे। तो वाई इंफॉर्मेशन पैकेज इज इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन पैकेज देख के हमको पता चलेगा कि कितना डेटा चाहिए, डेटा कौन से डायमेंशन पे चाहिए, और हर एक डायमेंशन पे कौन से लेवल पे लगेगा डेटा। ओके, क्लियर? समझ में आया? हमको हर लेवल तक का डेटा मिलेगा ना यूजर से, यस यस, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बड़े तक का ना। यूजर का डेटा हमें कैप्चर करना है। ओके, सपोज मैं मैकडी का एग्जांपल लेता हूं, आई टेक एग्जांपल ऑफ मैकडी। ओके, व्हेन एवर यू प्लेस एन ऑर्डर, ओके, मे बी वहां पे जाके, मे बी ऑनलाइन, मे बी ड्राइव थ्रू, कभी भी आप ऑर्डर करोगे, वो जो ऑर्डर वहां पे उनके सिस्टम में प्लेस होता है, दैट इज ऑपरेशनल सिस्टम। अपना एक नॉर्मल डेटाबेस सिस्टम होता है जहां पे वो लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। ओके, दैट ऑर्डर, सपोज आपने 2 बर्गर ऑर्डर प्लेस किया, तो दैट इज प्रोडक्ट आईडी रहेगा उसका कुछ। ओके, प्रोडक्ट आईडी रहेगा। ओके, कौन से रीजन में आपने वो ऑर्डर प्लेस किया वो रहेगा, और कौन से डेट पे आपने वो प्रोडक्ट प्लेस किया वो रहेगा। अपने अपने एग्जांपल में मैकडी का मैं घुसा रहा हूं। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पैकेज, अगर मैकडी का एग्जांपल लेते हैं, तो आपने जो ऑर्डर प्लेस किया तो उसका प्रोडक्ट आईडी रहेगा, कौन से रीजन में वो ऑर्डर प्लेस हुआ, कौन से डेट पे हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑर्डर कितना प्रॉफिट हुआ, और कितने बर्गर गए, 2 बर्गर गए, और लेट से उनको 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ओके, ठीक है, तो ये डेटा हमें कैप्चर करके डेटा वेयरहाउस में डालना है। ओके, हाँ, व्हाट वाज योर डाउट? No, sir. Hi, sir. My doubt was that the user who wants the data to be analyzed, when he gives the data, he will give us the data to the minimum level, right? If he gives the data till the date, so जो range है वो user ही decide करेगा ना कि मेरे को कहाँ से कहाँ तक का data मैं तुमको दूंगा. According to him, he will. One second. Yeah, 1 second. I'll answer your question. See, basically, अपने केस में डेटा वेयरहाउस जब हम डिजाइन करते हैं, वो केस में जो यूजर है, यूजर आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैनेजर्स, दे आर नॉट टेक्निकल पीपल। उनको कुछ नहीं समझता है डेटा का लेवल वगैरह, दे गिव यू वेरी रफ आइडिया। ओके, अपने सिस्टम में हमको ऐसा प्रोविजन करना है कि फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूजर, कि हमको समझना पड़ेगा कि ओके, यूजर रिक्वायर्स दिस डेटा टू बी एनालाइज्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायमेंशन, एंड एट ईच डायमेंशन ही मे एनालाइज डेटा एट दिस लेवल्स। ओके, फिर हम ही डिजाइन करेंगे अपना ETL प्रोसेस, दैट इज वन प्रोसेस कॉल्ड ETL प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। ओके, दैट इज कॉल्ड ETL प्रोसेस, ETL, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। ये प्रोसेस हम ऐसे डिजाइन करेंगे कि ताकि यूजर ने जो लेवल्स बोले हैं वो कवर हो जाए। कौन से लेवल पे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ओके, कौन सा उसको ट्रांसफॉर्मेशन देना है, और कैसे उसको टेबल में लोड करना है, दैट इज ETL प्रोसेस। तो यूजर के एक्सप्लेनेशन से हमें पता चलेगा कि यूजर को मिनिमम कौन से लेवल तक जाना है, एंड अकॉर्डिंगली विल डिजाइन ETL प्रोसेस। और वो ETL प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग डेटा फ्रॉम ऑपरेशनल सिस्टम, जहां पे ऑर्डर प्लेस हुआ वहां से उठा के वो डालेगा डेटा वेयरहाउस में, और एक बार डेटा वेयरहाउस में आ गया, देन अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन पैकेज, these are the possible levels at which user may perform analysis along each dimension. उसके ऊपर एग्रीगेशन हो सकता है, बट इसके नीचे ड्रिल डाउन नहीं हो सकता। Is that clear? Yes, sir, completely. Yes. Yeah. Okay. एक स्पेशल टाइप का एनालिसिस हो सकता है, थर्ड एनालिसिस, थर्ड ऑपरेशन,
सो रोल अप एंड ड्रिल डाउन सबको समझ में आया। रोल अप में क्या होता है, मर्ज करना पड़ता है सेल्स को, हमको एग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन मिलता है। ड्रिल डाउन में क्या होता है, सेल को स्प्लिट करना पड़ेगा और हमको और डिटेल्ड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगा। दैट इज एवरीवन क्लियर, राइट? किसी को डाउट नहीं है? No, ओके sir. ओके अभी थर्ड काइंड ऑफ एनालिसिस हो सकता है ऐसा कि यूजर सेल्स मैनेजर को एनालाइज करना है प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स over all the months of 2021 only in region R2. All the products over all the months but only in region R2. मतलब user wants this particular data, इतना चाहिए उसको डेटा, ये डेटा चाहिए उसको, ये पार्ट, ये वाला पार्ट। आर यू गेटिंग द ग्रीन वन? ये पार्ट, ओके इसको एक्सट्रैक्ट करके यूजर क्या करेगा, यूजर को ऐसा दिखेगा, फिर इतना ही दिखेगा। यूजर आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन यूजर को इतना ही दिखेगा। आई एम ड्राइंग वेरी रफली, सॉरी। ओके यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आ गए, यहाँ पे सारे मंथ आ गए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? R2 only R2 let's say other region। सो यूजर को खाली क्या मिला, अगर आप ब्रेड का एक पैकेट ओपन करते हो और किसी विप्स का ब्रेड पूरा बंच उठा के बाहर निकालोगे तो उसमें यू कैन सी वेरियस स्लाइस ब्रेड। ओके वेरी सिमिलर टू दैट, यहाँ पे एक स्लाइस मिलेगा। ओके सो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड स्लाइस ऑपरेशन। ओके बट जरूरी है कि स्लाइस खाली रीजन में हो सकता है कि यूजर को खाली प्रोडक्ट P2 में इंटरेस्ट है। सो प्रोडक्ट P2 के लिए सारे रीजन में कितना प्रॉफिट हुआ अक्रॉस डिफरेंट मंथ, तो ये वाला स्लाइस लिया वर्टिकल। हो सकता है यूजर को खाली फरवरी मंथ का डेटा चाहिए, सो खाली फरवरी मंथ में सारे रीजन में सारे प्रोडक्ट के लिए कितना प्रॉफिट हुआ। सी द एडवांटेज ऑफ डायमेंशनल मॉडलिंग, आर यू गेटिंग? तो यूजर क्या कर सकता है, स्लाइस कर सकता है ये क्यूब को आइदर विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट और विथ रिस्पेक्ट टू रीजन और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके स्लाइस समझा सबको? हेलो सर एक डायमेंशन सबसेट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे। सॉरी सर वी आर ओनली एक्सट्रैक्टिंग वन सबसेट ऑफ अ डायमेंशन ना। यस वन पर्टिकुलर सबसेट ऑफ द डायमेंशन। मतलब मैंने अगर रीजन R2 मांगा एज अ सेल्स मैनेजर, मैंने बोला मुझे रीजन R2 का सारा डेटा दो, तो उसको ये स्लाइस दिखेगा जो मैंने ग्रीन में ड्रॉ किया है, जिसमें सारे प्रोडक्ट हो गए P1 टू P100 सारे प्रोडक्ट, सारे मंथ हो गए जन 2021 से दिसंबर 2021, बट एक ही रीजन मिलेगा R2, बिकॉज उसको एनालाइज करना है कि रीजन R2 में क्या चल रहा है इन मोर डिटेल। ओके हो सकता है कि रीजन R2 में सेल्स डाउन जा रहा है, तो उसको एनालाइज करना है कि क्या हुआ रीजन R2 में, क्या हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट का सेल्स डाउन जा रहा है, कौन से मंथ में डाउन जा रहा है, एग्जैक्टली कहां पे रीजन R2 अफेक्ट हो रहा है। आर यू गेटिंग? तो वो स्लाइस निकालेगा पूरे क्यूब में से, अगर उसको रीजन R2 एनालाइज करना है। अगर उसको प्रोडक्ट P2 एनालाइज करना है तो एक वर्टिकल स्लाइस निकालेगा, सी द वर्टिकल लाइन P2 के ऊपर जो वर्टिकल लाइन है, राइट। सारे रीजन आ जाएंगे R1 टू R50, सारे मंथ आ जाएंगे जन टू दिसंबर, बट खाली P2 आएगा। उसमें उसको क्या दिखेगा, प्रोडक्ट P2 में कितना प्रॉफिट हो रहा है अलग अलग रीजन में एंड अलग अलग मंथ में, बट ओनली फॉर प्रोडक्ट P2। समझा? और सपोज उसने फेब का स्लाइस निकाला, फरवरी का, तो उसमें सारे रीजन आ जाएंगे और सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। उसको दिखेगा कि फरवरी मंथ में, ओनली इन द फरवरी मंथ, सारे प्रोडक्ट का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कौन से रीजन में हो रहा है। क्लियर स्लाइस ऑपरेशन? यस सर क्लियर। ओके हो सकता है कि उसको 2-3 स्लाइस साथ में निकालना है,
region R2 and product P2. Region R2 and product P2 over all the months. Then now it is not a single slice. Product P2, यहाँ पे product P2 है, ये slice in the product P2 ये है. Okay. In region R2 over all the months, nothing but उसने slice किया across 2 dimensions. Okay, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसको ये part चाहिए, ये वाला part, इतना ही part चाहिए. तो अभी ये तो slice नहीं है. Okay, तो इसको बोलते हैं slice and dice. Okay, dice करना मतलब slicing across multiple dimensions simultaneously. Slice मतलब only one particular dimension. You select one dimension and cut across the cube in that dimension. Are you getting the difference in slice and dice? Dice में क्या होगा? You cut across multiple dimensions simultaneously. More than one dimension. Okay. Is this clear? Hello. So dice operation can only be done after slice ना, ऐसा बोल रहे हो आप? No, I'm not saying that. Slice operation मतलब you cut across the cube only for one specific dimension. अगर region को select किया, so you cut across the cube only region. बाकी के सारे dimension as it is रहेंगे. Okay, so that's why if you select region R2, सारे products आएंगे, सारे month आएंगे, but खाली region R2 आएगा. If you cut across P2, then खाली product P2 आएगा, but सारे regions आएंगे, सारे months आएंगे. And if you cut across time dimensions, if I सारे regions आएंगे, सारे products आएंगे, but only February आएगा. Okay, so in slice, you cut across the cube only for one specific dimension. Okay, but if you cut across the cube multiple dimensions, तो हो जाता है dice operation. तो उसमें पूरे cube का एक subset मिलेगा आपको. Okay, तो suppose मैंने ऐसे कट किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ऐसे कट किया. Okay, पीछे वाला पार्ट लेते हैं, यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक का कट किया, like horizontally, vertically, and this dimension also like this. तो मुझे ये पार्ट मिलेगा जो यहाँ से दिख नहीं रहा है एक्चुअली. ओके, तो ये पार्ट में कुछ कुछ रीजन आएंगे, कुछ कुछ मंथ आएंगे और कुछ कुछ प्रोडक्ट आएंगे. ओके, क्लियर? So सर इसमें मतलब फरवरी का हमने 2 weeks ले लिया, राइट? सो बाकी का 2 week हमने नहीं लिया, राइट? सो ऐसा ना? वन सेकंड. रोल अप ड्रिल डाउन नहीं कर रहे हो. व्हेन यू आर स्लाइसिंग एंड डाइसिंग एट वन पर्टिकुलर लेवल यू आर स्टिकिंग. इट इज मंथ वाइज ओनली, रीजन वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज. अभी वीक की बात ही मत करो. ओके सर, सो मतलब स्लाइस में सिर्फ एक और डाइस में एक से ज्यादा, करेक्ट? Yes. Slice मतलब you cut across the dimension, you cut the cube across only one dimension. एक dimension को select करो, उसका पूरा इधर से लेके उधर तक को उसको cut करो. So slice you very easily understand. Like region R2 का slice समझा ना, एकदम simple. Right? Yes sir. Dice operation में क्या करते हैं? मुझे I want to cut across multiple dimensions simultaneously. तो मैंने ये इसको इधर से cut किया, तो मुझे इतने रीजन्स मिलेंगे. ओके, फिर मैंने इधर इसको ऐसे कट किया, तो फिर मुझे इतने प्रोडक्ट मिलेंगे. एंड देन मैंने इसको ऐसे कट किया, तो मुझे इतने मंथ मिलेंगे यहाँ से यहाँ तक. तो नाउ आई एम गेटिंग एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इट. एक छोटा सा क्यूब मिलेगा जिसमें कुछ कुछ रीजन आ गए, कुछ कुछ प्रोडक्ट आ गए, कुछ कुछ मंथ आ गए, बट नॉट द होल क्यूब. ओके, सो दैट इज कॉल्ड डाइस ऑपरेशन. Okay, so in dice operation you get a smaller cube from the entire big cube to perform detailed analysis of that part if you want. Dice is not very useful, but slice is very useful. Okay, is this clear? Yes sir. Okay, and now the fourth operation, वो थोड़ा difficult है to understand it. Okay. What if I look at this cube from the front here? This is my viewing direction. ये जो सामने जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? ये पूरा दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है, right? What is the data on this face?
जनवरी मंथ का पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा जनवरी मंथ का, हाँ पूरा जनवरी मंथ का इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स फॉर ऑल द रीजन, बट जनवरी में। अगर वो फेस मैंने वो पहला स्लाइस हटा दिया, ये स्लाइस मैंने रिमूव किया, जैसे कैलेंडर का पहला पेज निकालते हो, तो फिर मुझे क्या दिखेगा? So all product, all region for February. February. Then उसकी nothing but you get to know profit and number of units sold for all products in all regions month by month. It is month wise analysis. You get to know कौन से month में क्या हो रहा है, बराबर? जनवरी के बाद फरवरी में इतना हुआ, फरवरी के बाद मार्च में ऐसा हुआ, मार्च के बाद अप्रैल में ऐसा हुआ, for all the products in all the regions. Correct? What if I rotate the cube? After rotating the cube, let's say region axis यहाँ पे आ जाता है, okay, product axis यहाँ पे आ जाता है, और जो time axis था वो यहाँ पे आ जाता है. My viewing direction is same. मैंने क्यूब को रोटेट किया, क्यूब को रोटेट किया like this. Okay, 3 dimensional 3D रोटेशन होगा वो, because अपना क्यूब 3 dimensional है. After rotation मेरा time axis यहाँ पे आ गया, प्रोडक्ट एक्सिस यहाँ पे था वो ऊपर चला गया, और रीजन एक्सिस यहाँ पे था वो उसके ऊपर चला गया, यहाँ पे टाइम की जगह. नाउ इफ आई लुक एट दिस फेस, व्हाट आई गेट? So for region R1, the products and the time taken. I mean, Okay, I get the same data, profit and units sold for all the products over all the months region wise. R1 में क्या हुआ, वो स्लाइस हटाया तो R2 में क्या हुआ? Nothing but I am analyzing same data. Data change नहीं हुआ है. Data is same, but now I am analyzing data region by region instead of month by month. ये region में क्या हुआ during entire year for all the products? ये region में क्या हुआ during entire year for all the products? ऐसा करते करते हर एक region. After further rotation, product और ऊपर चला जाता है, रीजन नीचे आ जाता है, और टाइम लेफ्ट में चला जाता है. नाउ यू टेल मी व्हाट हैपेंस इफ आई कीप माय व्यूइंग डायरेक्शन सेम. आफ्टर वन मोर रोटेशन, क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट एक्सिस यहाँ पे आ जाएगा, ओके, टाइम एक्सिस जो यहाँ पे आया था वो यहाँ पे आ जाएगा, और रीजन एक्सिस जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा. Okay, my viewing direction is this. अभी मुझे क्या दिखेगा? So product P1 का total data. हाँ, प्रोडक्ट P1 का पूरा डेटा सारे रीजन में ओवरऑल द मंथ. उसको हटाया तो प्रोडक्ट P2 का दिखेगा, उसको हटाया तो प्रोडक्ट P3 का दिखेगा. मतलब now I am able to perform analysis of my data product by product. So मेरा डेटा सेम है, but analysis is totally different. कोई डेटा को प्रोडक्ट वाइज एनालाइज करना, फिर मंथ वाइज एनालाइज करना, फिर रीजन वाइज एनालाइज करना, एनालिसिस इज टोटली डिफरेंट, बट डेटा रिमेन्स सेम. आर यू गेटिंग? यू आर लुकिंग एट डेटा फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि कौन से रीजन में क्या हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट के लिए क्या हो रहा है, कौन से मंथ में क्या हो रहा है. ओके, सो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड पिवट ऑपरेशन. पिवट मतलब व्हाट? So rotate. रोटेशन. पिवट मतलब रोटेशन. ओके, सो रोटेट करने से क्या होगा? यू विल बी एबल टू परफॉर्म एनालिसिस ऑफ सेम डेटा फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव. दैट इज कॉल्ड पिवट ऑपरेशन. अंडरस्टूड? सो दीज आर द 4 OLEP operations which is possible because of dimensional modeling. अगर ER मॉडल से ER मॉडल से डेटा डिजाइन करोगे तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है. Sir, Okay? Yes. So अभी pivot हमने देखा, but if you want to represent the same data in terms of slice, तो 3 बार ऐसे अलग-अलग बार slice करना पड़ेगा ना? अरे बट कितनी बार स्लाइस करो? स्लाइस विल गिव यू, स्लाइस विल गिव यू ओनली दैट पार्ट. अभी ये पार्ट का हम डिटेल में एनालिसिस करते बैठो, बट देन यू कैन नॉट से मैंने ये स्लाइस को रिमूव किया तो उसके पीछे मुझे वो डेटा दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा. बट इसमें यू कैन गो वन बाय वन, पहले ये रीजन, बाद में वो रीजन, बाद में वो रीजन. ओके सर, फ्रॉम अभी फॉर एग्जांपल इन दिस वन अगर प्रोडक्ट P1 का सब डेटा देख रहे हैं, सो फ्रॉम मूविंग प्रोडक्ट P1 to P2 इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस, इज इट इजी कंपेयर टू डूइंग स्लाइसेस, कि एक को पूरा निकाल के फिर दूसरा का देखने का? सो इट्स इजियर टू डू दैट सर.
in terms of doing the data? Easier का मतलब क्या है? It is mainly user want to perform in slice and dice क्या है? User को एक particular region पे focus करना है, उसको वही region का data चाहिए, उसको one particular region पे focus करना है, but then दूसरे region में क्या हो रहा है उसको पता नहीं चलेगा from that slice. ये R2 पे ही focus कर रहा है, R1 में क्या हो रहा है, R3 में क्या हो रहा है वो नहीं पता चलेगा. But when you perform rotation, you have an option to like go through different regions one by one. समझा? Slice कर लिया तो region R2 का slice मिल गया, but then you cannot compare it with R1, then R3, then R4, because वो slice निकाला आपने. वही slice को अंदर से देखो, अभी ज्यादा डिटेल में देखो, but you cannot compare that with region R1 or region R3 or any other region, because आपने क्यूब में से वो स्लाइस निकाल के अलग कर दिया. It is as good as पूरा जो ब्रेड का पैकेट था, उसका जो पूरा स्टैक था ब्रेड का, उसमें से एक स्लाइस निकाल के अलग कर दिया. अभी वही स्लाइस को आप डिटेल में एनालाइज कर सकते हो, but you cannot compare that slice with the other slice of the entire packet. Okay, whereas in rotation you are not removing the slice, you are just lifting that slice to see what is there in the next slice. उसके बाद उसको lift करो, you are not extracting it out. Okay, So for comparison it's much easier कि R1 yes, पे if you want to, R2 पे yes, जाते हैं. if you want to go through different regions one by one, then slice is not a good option, is not a correct option, क्योंकि वो particular slice निकाल के अलग कर देगा, then you cannot walk through different regions. Whereas rotation में वो आपको फायदा है कि यही डेटा मैंने region wise analyze किया, now I want to analyze time wise, month wise, or I want to analyze the same data product wise. Slice करने के बाद वो ऑप्शन नहीं रहता आपके पास. समझा? Yes sir, clear. Okay, so I hope this all of operations are understood, and this is very important topic with respect to your end semester exam. Also, you have a practical exam for this subject, I guess. Practical exam है ना इसका? हाँ सर, business intelligence. तो साथ में उसके वाइवा होता ही है, तो वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछेंगे. All of operation they will definitely ask. Okay, तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि what are these all of operation, हर एक ऑपरेशन का क्या पर्पस है और वो कैसे होता है. ठीक है, अभी तक हमने एक भी टेबल का डिस्कशन नहीं किया है. इंफॉर्मेशन पैकेज को हमने विजुअलाइज किया कि जब डेटा स्टोर करेंगे तो उसको विजुअली मैं कैसे दिखाऊं, तो दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन. ओके, और उसका एडवांटेज क्या है, आई कैन परफॉर्म दिस ऑल ऑफ ऑपरेशंस. ठीक है, एक्चुअली सब होगा टेबल के ऊपर. ओके, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन पैकेज इनटू सेट ऑफ टेबल्स, and the schema here is not called relational schema. Okay, the schema here is called star schema. Okay, but as it is first lecture today and I got stuck in college, I'm still in college, so now I have to leave. So आज हम थोड़ा जल्दी बंद करेंगे, but I hope this is well understood by everyone. किसी को डाउट है ये पॉइंट में अभी तक जो हमने डिस्कस किया? No sir. So it is all about analysis, और ये डेटा बिजनेस का ही डेटा रहता है, कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं होता. It is all about business data. So data warehouse is used for performing, this is very simple example, but complex analysis of business data. Okay, and उसके अंदर ये अलग ऑपरेशन बहुत यूजफुल है. Okay, तो वो डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमको लगता है इंफॉर्मेशन पैकेज, और एक बार इंफॉर्मेशन पैकेज हो गया ड्रॉप होके, then we convert it into set of tables. Eventually data will be stored in the form of tables only, but tables are not organized the way they are organized in relational database. Okay, so the resultant schema is not called relational schema, it is called star schema. Okay, तो वो हम next time देखेंगे how to convert this information package into star schema. Okay, and further snowflake schema. So today we stop here. Okay, तो अगर किसी को कोई डाउट है आज का जो डिस्कशन हुआ उसके अंदर, आज मैंने जो एक्सप्लेन किया, so you can ask me quickly. हेलो सर. हेलो सर. Okay, yes. सर ये सब्जेक्ट के लिए DBMS मतलब प्रीरिक्विजिट है क्या? Obviously ना, DBMS तो सबने पढ़ा ही है ना.
हाँ सर मतलब एकदम ऐसे डिटेल में आना चाहिए क्या? देखो डेटा वेयरहाउस डिटेल में समझना है तो डेटाबेस तो आना ही चाहिए, बराबर। मैंने ये नहीं बोला कि एडीएमटी प्री रिक्विजिट है, बिकॉज एडीएमटी वाज डिपार्टमेंट लेवल इलेक्टिव इन सेमेस्टर 5। तो ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ एक्चुअली जिसने एडीएमटी लिया होगा उसको ये सब आना चाहिए एक्चुअली। ओके, बट आई एम नॉट अज्यूमिंग दैट किसी ने एडीएमटी लिया है। आई एम एक्सप्लेनिंग विद रिस्पेक्ट टू लाइक अज्यूमिंग के सबने डीबीएमएस तो पढ़ा ही है, तो प्राइमरी की क्या होता है, रिलेशनल डेटा क्या होता है, ईआर मॉडल क्या होता है, ओके नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। देन यू अंडरस्टैंड डेटा वेयरहाउस प्रॉपर्ली, बराबर। हाँ सर। ओके, और किसी को कुछ डाउट है? हाँ हेलो सर, हम लोग पाइवट को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या सिंपल वर्ड्स में कि अपना जो ये रिप्रेजेंटेशन है इसको रोटेट करके स्लाइस किया है। रिप्रेजेंटेशन, वन सेकंड, रिप्रेजेंटेशन को रोटेट नहीं करना है। विजुअलाइजेशन। वन सेकंड, टू अंडरस्टैंड दिस ऑपरेशन हमने यहाँ पे क्यूब ड्रॉ किया है। ओके, यूजर को ऐसा क्यूब नहीं दिखाने का है, अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। ओके सर। हम यहाँ पे क्यूब क्यों ड्रॉ कर पाए? बिकॉज अपने पास 3 डायमेंशन थे। अगर मेरे पास चौथा डायमेंशन होता तो मैं कैसे ड्रॉ करूं? आई बात समझ में? यस सर। हाँ राइट। सो ये क्यूब हमने इसलिए ड्रॉ किया है ताकि ये जो ऑपरेशन है रोल अप, ड्रिल डाउन, स्लाइस डाइस एंड पिवट, दैट यू इजीली अंडरस्टैंड कि ओके वो कैसे होता होगा। ओके, बट एवरीथिंग हैपेंस ऑन टेबल्स ओनली, सेट ऑफ टेबल्स। ओके सर। बिकॉज जो स्क्रीन पे अल्टीमेटली दिखेगा वो तो 2D में ही दिखेगा ना। हाँ सर। तो हाँ यस। सर अभी जैसे किसी ने और पूछा था कि अभी रोटेट का हो रहा है, अब मेरा डाउट है कि right now we are looking at all the data with respect to one subset of a dimension. For example R1 के हिसाब से हम पूरा देख रहे हैं कि उसका प्रोडक्ट कितना बिका और कितने टाइम में बिका। If it is greater than the 3 dimension तो उस केस में एक से ज्यादा चीजें हाइड हो जाएंगी ना, मतलब कि सपोज देयर इज रीजन एज वेल एज some other parameter as well, so उसका भी हम सिर्फ एक एक देखेंगे और उसके हिसाब से सब देखेंगे, राइट? यस करेक्ट, यू आर करेक्ट। इट इज एज गुड एज, सपोज मैंने यहाँ पे और एक डायमेंशन डाल दिया तो मैं क्या करूंगा, और एक क्यूब बनाऊंगा उसके बाजू में। हाँ ओके, इसके बाजू में और एक मैंने क्यूब बनाया। ओके लेट्स से कहाँ गया कर्सर, सेम क्यूब मैंने यहाँ पे इसके बाजू में बनाया ऐसा। ओके, तो ये एक और डायमेंशन हो जाता है, एक के पीछे एक क्यूब है। सो द क्यूब इटसेल्फ इज 3 डायमेंशनल एंड क्यूब के पीछे क्यूब becomes the 4th dimension. Okay, it is as good as having one complete page of cubes. हाँ वैसा। तो वो ग्राफिकली यहाँ पे ग्राफिकली विजुअलाइज करना पॉसिबल ही नहीं है ना। करेक्ट। बट जब स्क्रीन पे डेटा को रिजल्ट, यूजर को रिजल्ट दिखेगा, दैट विल हाइड मल्टीपल थिंग्स इन दैट केस। यू आर करेक्ट। So why do we do this cube system and all? I mean, directly ऐसे नहीं कर सकते क्या? I mean, or is it important that for us to visualize cubes and all are required? No. To understand this thing, ये ऑपरेशन अंडरस्टैंड करने के लिए ये आपको लगेगा। Okay, fine. चलेगा। राइट। Oh yeah, fine. ओके, इवेंचुअली जब क्वेरी रन होता है, अल्टीमेटली क्वेरी रन होता है, उसमें भी एसक्यूएल क्वेरी ही रन होता है, उसमें भी एग्रीगेट फंक्शन वगैरह यूज होता है, ग्रुप बाय, वेयर क्लॉज वगैरह वही रहता है। ओके, बट द वे यू गेट फाइनल डेटा, ये रोलअप हो क्या है? अरे बट रोलअप क्या है वो समझने के लिए ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी। Right, sir. Understood. ओके